Good morning, good morning, good morning, students. Today we are going to start with the fresh accounting standard 4 and accounting standard 5. Okay, so this is your chapter number 7, which is accounting standard based on the items which impacts on the financial statements. So these accounting standards are basically 4, 5, then you have 11 and 22. So there are 4 standards. Today we'll cover 2 standards, and next session, that is on Thursday. But Thursday is, I think, Diwali holiday. Lakshmi Puja might be on Thursday है, 31st है ना? नहीं, 1 को नहीं है, 31st को लक्ष्मी पूजा है. So next class is on Saturday. Okay, ओम ने लिख दिया. ठीक है. So बेटा, let's start. Students, how was your accounting standard 15? Was simple or difficult? I hope you solved your all illustrations, DBO. Yes, write it in comment section. फटाफट लिख दीजिए भाई. Okay, now it is simple. ठीक है. चलिए, सो अभी आज का सेशन चालू करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए लेने वाला हूं क्योंकि S4 माइट बी सम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आर देयर. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद S4 फर्स्ट. Contingencies and events occurring after balance sheet date. Let's quickly revise this. So if you are aware about this accounting standard, number 1, contingencies. What is contingencies? Contingencies is provision for bad debts. Actually, we have contingent liability standard over there, but here only the word contingencies covers provision for doubtful debts. And as per prudence concept, we have to record it in the books of accounts, that contingencies. Now, events occurring after balance sheet date means what? And dividends declared after balance sheet date, and events after affecting going concern and disclosure part. So, contingencies is a condition or situation, the ultimate outcome of which, now this is a situation, outcome of which, whether gain or loss is determined only on occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. So friends, you are already aware about this contingency definition. Contingent liability definition in the same way, but there is obligation, but here is a condition. So the definition, the difference between two definitions is that contingent liability is the obligation to pay, the ultimate outcome of which, whether gain or loss, will be known only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. See, if you look at the definition, in Institute Study Mat, you will get it in the paragraph form. And whenever you break this definition, it will be very easy to write the provision in exam. And ultimately, you have to write it properly in the exam. The language of this accounting standard is very important. Whenever you are writing it in the exam, you have to understand the flow of the accounting standard, how you are going to use the language. So language, now how to recall this, break down your definition, and it is a busy solution for any question. Okay, so remember, so contingencies is very simple, and only one question is there, that is a provision for doubtful debts on this contingencies definition. Now contingent losses, we already know that provision for losses and contingent gains, we are not never recorded in the books of accounts as per prudence concept. As per prudence concept, only if you have 100% surety about your profits, then only you are going to book it. Okay, so if you are going to you are not going to pay any creditor, so don't record it as your income. Now whenever you will settle the amount, at that time you will record the income. So there is no provision on creditors, but there is provision on only doubtful debts on debtors only. Okay, so there is no provision for doubtful debts on creditors. Suppose if we are not going to pay to our creditors, we are not going to record it now. When we settle the account, at that time we will record it as discount. Okay, otherwise it is like deficiency. And in case of provision for doubtful debts, though he has not yet settled the transaction, but if you are anticipating it, then you are going to record it. Okay, so that is the difference between doubtful debts versus creditors. And in 11-12 standards, beta, some authors, they might write provision for creditors or discount, but this is not correct as per prudence concept of accounting. Okay, so creditors के ऊपर कभी भी provision नहीं करते, जो भी provision करना है वो debtors के ऊपर provision करना है, ध्यान में रखना.
Any difficulty in contingencies? Otherwise, we will move to the next part. Any difficulty if you have, you can raise your hand. ठीक है? Or I don't know, students are finding this standard very simple, 4 or 5, and that's why today's attendance is very less. Otherwise, you are now celebrating your festival, and this festival is not for you. और इतना भी आप लोग लेक्चर अटेंड नहीं करते रहोगे तो क्या बोलूं मैं आपको, करना ही चाहिए. दिस इज अ क्विक रिवीजन, एटलीस्ट लास्ट में आपको हम लोग ही साथ तो दे रहे. यस, यूट्यूब पे आ रहा है ना बराबर? बराबर आ रहा है ना? Some students are watching on YouTube. ठीक है, नो प्रॉब्लम. Yes, now we'll move to next concept. In next session, I'm going to complete Accounting Standard 22 and I will take more questions than Institute Study Mat. So don't miss next session. It is very important. Okay. Now events occurring after balance sheet date. Yes, Kashish, would you like to explain this events occurring after balance sheet date? How you can recall it? What is the definition? Beta, don't read the 100 pages book. Just tell me, are you able to recall it? Raise your hand, beta. Any one of you who recalls this definition? अच्छा, कशिश बेटा बोलिए जल्दी से. Yes, sir. Good morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग बेटा. events occurring after balance sheet date वो होते हैं जो significantly मतलब हमारी आई वांट balance sheet डेफिनेशन को. बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम. डेफिनेशन याद है Okay, sir. आपको? Yes, sir. एज इट Those इज. significant events that have favorable or unfavorable effect. फेवरेबल और अनफेवरेबल दैट ऑकर Uh, बिटवीन. Balance sheet date and the date of approval of financial statement वेरी at गुड the बेटा. board meeting. सो these are the significant events. Now, significant events means, suppose if small events, it is immaterial, then you don't record it in these favorable or unfavorable. You are not going to record it, though it is occurred after balance sheet date, but before the date of approval. I don't think I have to explain you all these points. What is the balance sheet date and date of approval? So you are already aware. This is a quick revision. So I'm not going to explain it in detail. Okay. If you have any query, you can raise your hand and you can ask me. Yes, those students who are not aware about this standard balance sheet date and date of approval, you first watch my recorded lecture of regular batch and then it will be very easy for you. Okay. Now, what are the significant events? Significant events are adjusting versus non-adjusting. Now, what is adjusting event? Yes, beta Kashish. Adjusting event क्या होता है बेटा? Sir, events which provide additional evidence of conditions That exist that on the exist balance at the sheet. balance sheet date. वेरी गुड बेटा. ये देख के बता रहे हो या कब रिवाइज किया था आपने? सर मैंने आज सुबह ही रिवाइज किया था आने से पहले. अरे वाह 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 वाह, सुबह रिवाइज किया था डेफिनेशंस को, इसलिए इतना अच्छे से याद हो रहा है. कीवर्ड्स ही ध्यान में रहते हैं, बाकी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है. क्या हो जाता है? सर बाकी लैंग्वेज मतलब ऊपर नीचे हो जाती है और कीवर्ड्स मेन मेन ध्यान में रहते हैं. हाँ जैसे ठीक वो है ना, रेड पेन कीवर्ड्स भी वाले. लिखे. देखो बेटा, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है हमें. उधर इम्प्रेस करना है. देख 90 एक 100 स्टूडेंट्स के बीच में 10 से 15 स्टूडेंट होते हैं जो लैंग्वेज को याद कर सकते हैं. 85 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उसमें से कुछ टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखने वाले 20 लोग होते हैं एंड 25 रिमेनिंग 45 स्टूडेंट्स टू 55 स्टूडेंट्स का जो नंबर है, दे आर नॉट एबल टू रिकॉल इट. ओके, तो इसीलिए तो अपनी 100 पेजेस की बुक जो है ना, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है. एंड इफ यू आर रिकॉलिंग इट एवरी टाइम, तो आपको कुछ भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये ध्यान में रखना. आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनर के माइंड के साथ खेलना है. ठीक है, कि जब भी पेपर चेकर होगा, पेपर चेकर को ऐसा लगना चाहिए कि भाई क्या पेपर लिखा है इसने. भले आपकी लैंग्वेज, आपके ओन वर्ड्स यूज होने दो बाद में एनालिसिस और कंक्लूजन के टाइम पे, बट एटलीस्ट प्रोविजन के टाइम पे ना, यू हैव टू यूज दैट वर्ड्स. और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, वो उसको दिखाओ. जो आपको नहीं आता है ना, वो उसके सामने मत रखो ब्लैंक. इसीलिए पहले 15 मिनट में सीक्वेंस को देख लीजिए. सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट 15 मिनट, डिसाइड इट. और हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि भाई देख, ये पूरा गेम जो है ना, आई एम टेलिंग यू, यू हैव डन 100% हार्ड वर्क. नाउ इट इज अ टाइम टू शो इट टू योर पेपर चेकर.
ओके, ये शो टाइम है। अरे शो टाइम में आपको क्या करना है, आपको वो दिखाना है जो वो देखना चाहता है। मूवी के यस जैसा ये ध्यान में रखो, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपने क्या मेहनत की है, डायरेक्टर के टाइम पे सीन किसने किया, क्या किया, कुछ नहीं। शो टाइम है पूरा, और वही दिखाएंगे जो वो देखना चाहता है। तो इसीलिए पहले 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट डिसाइड कर लेना है, कौन से क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी, नहीं करूंगी। और जहां पे भी ऐसा होगा, यस आई कैनॉट रिकॉल इट, इट्स ओके, 1 मिनट का ब्रेक, पानी पीना है, मेहनत याद करनी है, अगेन राइटिंग, एंड इतना ही याद रखना है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, मुझे पूरा पेपर आना चाहिए जरूरी नहीं है, 40 to 50 मार्क्स का पेपर मुझे अच्छे से सॉल्व करना है। एंड रिमेनिंग पेपर जो है ना, वो मुझे इतना ही ध्यान में रखना है कि रिमेनिंग पेपर में से मुझे 25% भी आया तो भी मैं एग्जामिशन के पार हूं। ओके, तो ये ध्यान में रखो। वेरी गुड बेटा। एंड अभी आपका जो नर्वसनेस था वो निकल गया क्या, थोड़े दिन अभी पढ़ाई जैसे आपकी चालू है उस तरीके से? यस सर। वेरी गुड। हाँ, so adjusting event you understood. Now what about non-adjusting event? So we are going to solve some questions. So here events which are when there is a additional, provide the evidence of the conditions. So extra additional evidence जब आता है, we call it as एडजस्टिंग इवेंट। दरवाजा। हाँ, adjusting event। बंद है। Non-adjusting events which are indicative of the condition that arouse after the balance sheet date। आया समझ में? So which arouse after the balance sheet date is called as non-adjusting event, ध्यान में रखना। So non-adjusting event क्या होता है? Non-adjusting event में these events, so there is no condition which is existing on the balance sheet date, okay, and it is occurred after balance sheet date। So इसके भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एंड वी नीड ओनली डिस्क्लोजर। सो एडजस्टमेंट का क्या होता है? वी नीड टू ऑल्टर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ओके, फॉर यस एडजस्टिंग इवेंट। एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट में ओनली डिस्क्लोजर। डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, व्हाट इज द प्रोविजन बेटा आफ्टर बैलेंस शीट डेट का डिविडेंड? सर, आफ्टर बैलेंस शीट डेट का डिविडेंड हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वी नेवर रिकॉर्ड इट। वेरी यस गुड। सर, इट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिक्लेरेशन बाय द बोर्ड। So not recorded as a liability because it is not event occurring after balance sheet date, because it is after AGM। तो आफ्टर एजीएम होगा तो डिविडेंड को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और ओनली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। एंड इफ इट इज अफेक्टिंग योर गोइंग कंसर्न, देन बेटा substratum, then you have to alter, no? यस सर। Then you will show your assets and liabilities at fair value. At फेयर fair value. वैल्यू। What the concept? यस Yes. सर। So if it affects the substratum, ये line आपको याद रखना है, then you are going to record your financial statements on the liquidation basis. So not cost concept over there. And disclosure में nature of event and estimate the financial effect. ठीक है, चलो। Now it's time to start your extra questions and study mat questions also. डिटेल में करना है ना बेटा? यस सर। आज पूरा का पूरा स्टैंडर्ड 12:30 तक ये स्टैंडर्ड खत्म करते, एंड 12:30 to 1:30 दूसरा स्टैंडर्ड, मतलब पूरा रिवाइज हो जाएगा। चलो एक्स्ट्रा ओके। क्वेश्चंस। यस, एवरी वन ऑफ यू बेटा प्लीज पार्टिसिपेट। इफ यू एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। अभी भी नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी, रेज योर हैंड। नो डिफिकल्टी? पूजा जी, कोई डिफिकल्टी नहीं है? नो सर। अरे बाप रे, कैसे क्या पूजा जी, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं? सिंपल स्टैंडर्ड है। यस सर। हाँ, ठीक है। सो विल मूव। ऋषभ गुप्ता को कोई क्वेश्चन है? इवेंट बैलेंस शीट डेट पे नहीं होता है बेटा, कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे ऋषभ होता है। समझा ऋषभ? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तब आपको ध्यान में आएगा बेटा। चलो जल्दी से आ जाओ।
Yes, beta. Read the question. Yes, Kashish. sir. Yes, sir. In one of the manufacturing units of SS Limited, 40% of total assets were destroyed in a fire for which there was no insurance cover. The accountant of company contends that the destruction took place only after the date of balance sheet and there was no need to make disclosure of loss in the annual accounts as at the balance sheet date. Sir, disclosure तो करना पड़ेगा ना 40% of total assets. डिस्क्लोजर करना पड़ेगा या एडजस्ट नहीं, करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि काफी मेजर अमाउंट है ना 40% तो. एनी अदर स्टूडेंट बेटा? अनमोल पटवा, व्हाट इज योर आंसर? अनमोल बेटा, unmute yourself. Those students who can unmute, please raise your hand. So it will be a participative lecture. I'm not going to ask you questions. Don't worry. Sorry, sir, I can't mute. Okay, unmute. Okay. Other students? सिर्फ कशिश और ओम ही कर सकते हैं अनम्यूट. खुशी, पूजा, बेटा आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. आज रेज तो करो हैंड. आप एटलीस्ट हैंड रेज कीजिए तो मुझे समझ में आएगा. हम लोग पार्टिसिपेटिव लेक्चर रखते हैं. हाँ जी, मनस्विता. यस बेटा, मनस्विता, व्हाट इज योर लॉजिक? Sir, disclosure should be made as the condition did not exist after the condition existed after the balance sheet date. Okay. So that is not a adjusting event, and disclosure should be made. But I will tell you that you go with the diplomatic answer over here. Diplomatic answer मतलब क्या मनस्विता? कि don't judge it. We don't know ना कि whether it is going concern concept affects or not affects. Okay, and therefore if going concern concept is affecting, so if auditor is of the opinion that going concern concept is affected, in that case your assets and liabilities you have to alter it. Got the concept? Actually, this is non-adjusting event, but there is an exception of going concern. Okay. So Manaswita ji, yes, read the answer. Raise your hand बेटा मनस्विता, थोड़ा सा हैंड रेज करके रखिए. हाँ, so read कीजिए. Read the answer. Yes, sir. Provision of AS as per AS 4, events that indicative of conditions arising after balance sheet date are considered non-adjusting events. However, unusual changes that may affect the substratum of the enterprise may indicate the need to consider the use of fundamental accounting assumption of going concern. In such case, it shall become an adjusting event, and accordingly, assets and liabilities shall be restated at fair value, and the fact that the going concern assumption is no longer valid shall be disclosed. Analysis and conclusion. In this case, the loss of assets of SS Limited is clearly a non-adjusting event. However, the auditor shall inquire whether the going concern is appropriate or not, and if not appropriate, then treat it as an adjusting event and accordingly restate assets and liabilities at fair value. Easy? Yes, sir. समझ में आया कैसे रिकॉर्ड करना है? Yes, sir. Going Yes, concern को very affect good. करेगा तब वो adjusting हो जाएगा. हाँ, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ तो वो एडजस्टिंग हो जाएगा. ठीक है. Okay, sir. यस. मनस्विता, रीड दिस क्वेश्चन. और कशिश आप अपना माइक म्यूट पे मत रखिए. हाँ जी, सराउंडिंग में Mute नॉइज नहीं होगा तो करना. कशिश म्यूट कर देना फिर. Okay, sir. यस. चलो मनस्विता जी, रीड द क्वेश्चन. SS Limited had taken a large-size civil construction contract for a public sector undertaking valued at 2 crores. In the course of execution of the work on 29th May, the company found while raising the foundation work that it had met a rocky surface and costs of contract would go up by an extra 50 lakhs, which would not be recoverable from the contractee. The company's accounting year had ended on 31st March, and the accounts were considered and approved by the Board of Directors on 15th May.
How will you treat the above in the accounts for the year ended 31st March? क्या लग रहा है आपको? Sir, may I mute myself? There is background noise for me. Okay. Yes, Khushi, what is your opinion? Yes, Khushi. Sir, it is an adjusting event. Other, yes, beta, Kashish. Sir, it is occurred on 29th May and the financial statements were approved on 15th. So, Actually, ऋषभ आप तो एस का नंबर भी गलत बोल रहे हो बेटा. खुशी, can you see Yes. the date on which this rocky surface occurred? Yes, sir. 29th May, And when you are approving your books of accounts, 15th May. so is it event which is occurring between balance sheet date to date of approval, or it is occurring after date of approval? After date of approval. तो बेटा देखो, एक रॉकी सरफेस मिला था, एक बार हिंदी में बता देता हूँ आपको. अभी वो रॉकी सरफेस मतलब आप क्या कर रहे थे, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे. जैसे जैसे नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वहां पे बहुत सारा सरफेस जो होता है वो उधर क्या बोलते हैं, पत्थर रहेंगे बड़े बड़े, जिसको हिंदी में नहीं मराठी में खड़क बोलते हैं. तो ये जो रॉकी सरफेस होता है वो तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. कंपनी ने इसके बारे में सोचा नहीं था, पहली चीज. और ये सब सफर हुआ, ये कंपनी को ये लॉस हुआ 29 मई को. ये इवेंट उनको समझ में आया. अभी आपकी बैलेंस शीट डेट तो ठीक है, पर आपका डेट ऑफ अप्रूवल जो है वो 15 मई को खत्म हो रहा है. तो पहले तो इंस्टीट्यूट ने आपके वापस भावनाओं के साथ खेला कि आपको लगा रहेगा कि भाई ये कंस्ट्रक्शन काम चालू है तो एडजस्टिंग इवेंट. नहीं बेटा, आपने डेट को देखना चाहिए था. और ये डेट जो है ना खुशी, ये प्रोविजन ऑफ एस पढ़िए तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो एंड प्लीज रनिंग नोट्स निकालते रहिए, रनिंग नोट्स निकालते रहिए. यस बेटा खुशी, रीड इट. Provision of AS. Events occurring after balance sheet date are those significant events that are favorable or unfavorable that occur between the balance sheet date up to the date of approval of financial statement by the approving authority. Analysis and conclusion. The finding that the cost may escalate by 50 lakhs became evident after the date of approval of the balance sheet date. Hence, it is not covered under AS4 since it has occurred after the date of approval of financial statement. समझा कैसे लिखना है आंसर? Yes, sir. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 3. Who is going to read? Ayushi, you want to read beta? Yes, sir. Read it. SS Limited creates a provision for 75,000 while preparing a financial statement for financial year ending 31st March. On 31st March, in a आराम से meeting रीड with... कीजिए. एक सेकंड. Okay. So provision of 75,000 they want to create. हाँ. On 31st March, in a meeting with Staff Welfare Association, it was decided to increase the amount of provision for staff welfare to 1 lakh. The accounts were approved by Board of Directors on 15th April. Decide whether adjustment is required for year ended 31st March. तो आयुषी, 75,000 आपने ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ था. Yes, sir. And now you want to increase that provision to 1 lakh rupees. So you want to Yes. increase that by 25,000. Yes, sir. So 25,000 से increase करना है या नहीं करना is a question. What do you think? तो सर हाँ, हम इसका इंक्रीज करेंगे और ये एक एडजस्टिंग इवेंट होगा AS4 के हिसाब से. Correct है बेटा. Read the answer. Adjusting events are the events occurring after the balance sheet date which provides further evidence of conditions existing on the balance sheet date. So what you Analysis- understood, whenever you are writing provision, write only appropriate provision. If they are not asking you about non-adjusting event, are you going to mention this in the provision? No. Non-adjusting event definition?
No. No. नहीं, you will mention only adjusting event का provision, Adjusting event. Yes. definition. और आपको याद हो गया क्या डेफिनेशन, क्या नहीं हुआ है अभी तक? सर ये नहीं हुआ है एक्चुअली। मुझे ना डेंगू हो गया था, तो ये पिछला एक वीक में जो कुछ भी हुआ है ना, मैं उसका कॉप अप नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अब मुझे थोड़ा ऐसा मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रही हूँ किसी बात पे। कोई टेंशन नहीं, ये हद से होते रहते हैं, भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगा, डोंट हाँ वरी। ठीक है, और जो आगे के टॉपिक्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए, अभी जो पिछला एक हफ्ता गया वो छोड़ दीजिए। नो, हाँ। एटलीस्ट जो बाकी के टॉपिक्स है वो अच्छे से कर लेना। स्टिल यू हैव, अभी आपको कंप्लीट करने के लिए अच्छा खासा टाइम है, सो डोंट वरी। एंड आई एम गिविंग यू शॉर्टकट्स कैसे याद करना है। ओके, ओके, थैंक यू सर। so this is adjusting event and you are correct that हाँ ठीक है, Yeah. ये definition after the session you recall this definition and see this Yes, definition you sir. are going to forget, so when you have to recall this before 2 days, okay, once again, Yes. and try to Yeah. write at least 2-3 times this definition so you can recall it afterwards. Okay, this is how, Yes. see, I am also going to forget everything after certain days, and make sure you have to revise it in that 2 days. दो दिन होते हैं ना अपने पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 से 3 दिन उसमें पूरा याद करना रहता है ये, फिर बाद में एग्जाम के बाद तब भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, Okay. तो ये ध्यान में रखना। So this revised amount of 1 lakh relates to conditions already exist on the balance sheet date, and it is the adjusting event, so company should adjust it. Okay, Yes, sir. correct, yes beta, चलो, good। नागेश भाई, नागेश जी, Yes, sir. read question 4। SS Limited entered into an agreement to sell its immovable property included in the balance sheet at rupees 7 lakh to another company for rupees 35 lakhs. The So they are agreement to entering into agreement to sell. See beta, there are two agreements. Whenever you are entering into transaction, there are two agreements. One is agreement to sell, and after that you prepare sell deed. Do you know this, Nagesh ji, in real life? no, sir. नो, तो एक ध्यान में रखना, पहले कौन सा डीड बनता है, पहले एग्रीमेंट टू सेल बनता है इन रियल लाइफ ऑल्सो। मतलब जब भी मैं प्रॉपर्टी बाय करता हूं ना, तो मेरे और बिल्डर के बीच में पहले एग्रीमेंट टू सेल बनता है, फिर सब डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ में मेंटेनेंस होता है, सब पे होने के बाद लोन सैंक्शन हो जाता है एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे बैंक को एग्रीमेंट टू सेल ये सबमिट करना पड़ता है, एंड देन हम लोग सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं। सेल डीड फिर वो मेरे नाम पे जब उनके अकाउंट में लोन जाएगा तब तक वो मुझे सेल डीड नहीं करते हैं। गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes. हाँ, सो दो स्टेटमेंट्स है। तो द एग्रीमेंट टू सेल ये 31 जैन को ही कंप्लीट हुआ था, बट आफ्टर दैट बेटा इट टेक्स सम टाइम टू प्रिपेयर द सेल डीड, और सेल डीड कब बना? 30 अप्रैल को। ओके, सो 15 मई को डेट ऑफ अप्रूवल था, तो इट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Sorry, sir. Connection is lost. हाँ, Connection is lost for a few minutes. इट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? सी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ओनली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ये आपका बाकी है। सो दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ओके, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड दिस डेफिनेशन यू हैव टू राइट। प्रोविजन में आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, सो मेक श्योर कि दैट यू विल नॉट राइट ओनली एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली। So in this question, you have to explain substance over form concept also. ठीक है? So नागेश जी read कीजिए। Yes, provision of AS as per accounting framework, transactions recorded in the financial statement should reflect their economic substance. The principle of substance over form should be followed. Okay. Analysis and conclusions. Analysis. The asset has been sold before the balance sheet date, as evidenced by the execution of the sale deed and handing over the possession of the property. Correct?
And the agreement to sell was concluded on 31st of Jan. That is during the financial year. So you have to understand that significant risk and rewards relating to ownership has already passed to the buyer before the balance sheet date. So if significant risk and rewards are already transferred, then it is called as adjusting event. Got the concept? So registration of sale deed is not the legal, it is only the legal formality. And agreement to sell is we are already done. Okay. So this is called as adjusting event, not as non-adjusting event. Okay. And you are going to book your profit as on 31st of March. So don't wait for the 15th April when you are executing your sale deed. Okay. So here you have to make this adjustment on 31st of March itself. Whatever profit you will book it before 31st of March. This is called as adjusting event. Now let's move to next concept. Registration after balance sheet date. Registration after balance sheet date. Okay, so if you are done your registration, that is after balance sheet date, then how are you going to record it? SS Limited sends the proposal to purchase the immovable property for rupees 30 lakhs in March. The book value of the property is 20 lakhs as on the year end date. And the deed was registered on 15th April. What do you think? What do you think? Proposal to purchase दिया है ना बेटा, only sending the proposal is not amounts to sale. This is non-adjusting. Okay. In above problem, agreement to sell is ready. Sale deed is only remaining. So we are already completed almost all formalities. Only one formality is remaining in question 4. But question 5 is different. Okay? Yes. So Sai Kiran, read the answer. As per AS 4 events that indicative of conditions arising after balance sheet date are considered non-adjusting events. Non-adjusting events are to be disclosed by way of notes to accounts if their nature will materially impact users' information. Analysis and conclusive. Only proposal is sent as on balance sheet dated 31st March, which does not amount to sale. As on the balance sheet date, neither the portion of the property is handed over to the buyer, nor has the buyer paid entire amount to the seller. So it is a non-adjusting event. Arey wah. Very good. Chalo. Let's move to question 6. Kashish beta, read the question. Yes, sir. Question number 6. Advice SS बेटा ये limited क्वेश्चन का about. कुछ फायदा हो रहा है आपको कशिश? Yes, sir. और क्लैरिटी से आ रहा है, जैसे वो एग्रीमेंट टू सेल एंड प्रपोजल टू सेल. Yes, sir. About SS advice SS Limited about treatment of following in the financial statement of accounts for the year ended 31st March on 15 April due to destruction of factory by fire. Fire occurred in March. X, one of the company's debtors, declared himself insolvent. He owed 1,17,000 to SS Limited. सर अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट करेगा फिर एडजस्टिंग होगा. ऐसे illustration One book of में the दी थी. debtor affects your going concern. You read it No. carefully. Yes, sir. It is not in our Not. premises, beta. Yes, sir. It is sir, in the premises non-existing. of X. Yes, sir. Now, actually, when institute, I think this question was asked in 2006-7 something. I don't remember exactly the date.
but the answer provided by the institute at that time, it was not correct. Now we rectified. Okay, now my view on this, whether Kashish, we are aware about that he is going to become insolvent. No, sir. No, because on 31st March, there is no condition. There was no condition which is existing about his insolvency. His our debtor is a normal transaction. And he is in good condition at that time. So we are not concerned about any provision for doubtful debts. Some percentage we may record it. Now some students are telling me, sir, debtor तो था ना 31st March को, so condition is existing. No dear. Condition exist हो ही नहीं रही है. Condition exist हो ही नहीं रही है. ये ध्यान में रखो. ओके सर. सो ये हमेशा याद रखना है आपको कि कंडीशन कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होने वाली है. और ये भी ध्यान में रखो कि जब आपकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो हाउ इट कैन बी एडजस्टिंग इवेंट. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन बेटा वी आर नॉट अवेयर अबाउट हिज फाइनेंशियल कंडीशन and therefore on 31st of March he is in the good condition. So here there is no condition about his insolvency which is existing. Don't tell me he is our debtor is a condition. No, not at all. वो अपना डेटर है, वो कंडीशन नहीं है. उसकी पोजीशन अपने लिए कंडीशन है. यदि यही फैक्ट्री में आग ये बिफोर 31st मार्च लगी होती तो बड़ा कंडीशन वॉज एग्जिस्टिंग. ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Everyone understood this? Other students, at least write yes or no in the comment section, chat section में लिखो कि कंडीशन उसकी, हाँ जी भाई, कंडीशन उसकी जो है वो हमें 31 मार्च के पहले की पता नहीं है, तब वो अच्छा था. But if fire occurs before 31st of March and we are aware that his condition is going to he can become bankrupt, and in that case we will provide for the loss. Got the concept? Here no evidence, so only disclosure you can give if it is a material item, if it is a significant item. चलिए रीड कीजिए कशिश जी. Yes. कशिश रुको, आंसर रीड करने को किसी और को बोल दो. Provision of. वेट. दीपिका का तो माइक ही नहीं. सोनाली, कैन यू रीड दिस? Yes, sir. Provisions of AS. As per AS4, events that indicative of conditions arising after balance sheet date are considered non-adjusting events. Non-adjusting events are to be disclosed by way of notes to accounts if their nature will materially impact users' information. Analysis and conclusion. In this case, the fire has occurred after the balance sheet date. Thus, it constructs as a non-adjusting event. Hence, in such case, only disclosure is necessary. सोनाली, Yes, sir. एक क्विक रिवीजन करते बेटा हम लोग. Yes, sir. फटाफट 5-6 क्वेश्चन जो हमने किए उसका रिवीजन बता. दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज इट. 40% वाला क्वेश्चन क्या था? सर 40% वाले क्वेश्चन में डिस्ट्रक्शन आप बैलेंस शीट डेट के बाद किया गया था, तो इसका डिस्क्लोजर गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट था इसमें. ठीक है, भूल गए आप. हाँ, ये बताइए, ये रॉकी सरफेस का आंसर क्या था? यस सर, ये रॉकी सरफेस का आंसर होगा फाउंडेशन वर्क जो 50 लाख का रिकवरल था कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, वो 31 मार्च के बाद हुआ था, और लेकिन डेट ऑफ अप्रूवल के पहले तो ये एडजस्टिंग होगा. भूल गए आप, ये भी डेट ऑफ अप्रूवल के बाद हुआ था 29 मई के बाद. So this is not the event occurring after balance sheet date. Staff welfare expenses. सर ये एडजस्टिंग होगा. 2 क्वेश्चंस, 2 गलत आंसर हुए. एग्रीमेंट टू सेल.
एग्रीमेंट ऑफ सेल, ये सेल डेट बाद में हुआ था लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल पहले हुआ था, तो ये एडजस्टिंग होगा। एंड निगोशिएशंस चालू थे, प्रपोजल था। सर ये बाद में हुआ था, तो ये नॉन एडजस्टिंग होगा। नॉन एडजस्टिंग। इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, ये 31 मार्च को था लेकिन इन्होंने बाद में खुद को डिक्लेयर किया था, तो ये नॉन एडजस्टिंग होगा। नॉन एडजस्ट, नो कंडीशंस। ठीक है, थोड़ा सा पहले तो भूल गए थे, फोकस क्यों नहीं था? एनी स्पेसिफिक रीजन? सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल बैक कर करके देख रही थी, इसीलिए कहाँ से हो? कैचअप नहीं हो पाया। कहाँ से हो? सर उड़ीसा से। अच्छा, आपके इधर प्रॉब्लम चालू है ना कुछ तो? हाँ वो साइक्लोन का। साइक्लोन का? हाँ लेकिन इधर नहीं, ये तो वेस्ट उड़ीसा में थोड़ी साइक्लोन है। ओके ओके। आपको ऐसे नहीं लगता है कि ये लेक्चर्स जो है ये बहुत लास्ट मिनट पे चल रहे हैं, तो आपको फिर भी आप अटेंड कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन? सर रिवीजन के लिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, आपको लगता है इट्स वेस्ट ऑफ टाइम? नहीं सर बिल्कुल नहीं लगता, पढ़ने के बाद तो भूल जाती हूँ। अभी 2 क्वेश्चन अभी हमने कराया फिर भी गलत हुआ, तो रिवीजन तो 5 बार करने से भी कम ही लगता है। ठीक है, बराबर है बेटा। यस, चलिए, ओके, थैंक यू। कशिश, रीड क्वेश्चन 7। Yes, sir. Yes, sir. Hmm. With reference to AS4, state the treatment of the following event. A suit against company's advertisement was filed by a party on 10th April, 10 lakhs. सर कंडीशन देखनी पड़ेगी कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। सूट कब फाइल किया था? सर 10th अप्रैल को सूट फाइल किया था। तो वेदर एनी कंडीशन इज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट? नो सर। So it is non-adjusting event, correct? यस सर। Yes. Karnesh, are you going to read the answer? Yes, beta. Karnesh, would you like to answer it? Sorry, sir, I'm at a public library as of now. Huh? So, I'm at a Okay, public okay. ठीक library as of now. Sorry, sir. ठीक ठीक है। Kavita joined late. Yes, Manaswita, read the answer. Yes, sir. Hmm. Provision of AS. As per AS4, events that indicative of conditions arising after balance sheet date are considered non-adjusting events. Non-adjusting events are to be disclosed by way of notes to accounts if the nature will materially impact users' information. Analysis and conclusion. This does not pertain to conditions on balance sheet date, so it is a non-adjusting event. The contingency is restricted to conditions existing at the balance sheet date. However, in this case, suit was filed only on 10th April. Hence, it does not fit into definition of contingency. Very good, beta. Next question, read it. You are the auditor of a manufacturing company whose year ends on 31st March. An event occurred after the year ended, but before you complete the audit. The audit report issued by you is dated 20th July. The sales ledger balance at 31st March was 95,000. On this date, based on facts and circumstances, the company estimates that this debtor may become insolvent by 20th July. Rupees 65,000 only has been received against this amount as full and final payment. How will you deal with the above? The audit report was issued on 20th July. So the event occurred after balance sheet date, but before the general meeting. So it is an adjusting event. See, beta, whether we are aware about his insolvency on 31st of March. See, I'm telling you, 31st of March, he is our debtor, is not the condition which is existing on the balance sheet date.
We have to see his position, whether he is in good condition or bad condition. If there is no indicator of insolvency or any bad debts or any less amount that you are going to receive, in that case, no need to provide anything. Only disclosure is important. Okay, sir. मनस्विता समझा बेटा? Yes, sir. आपको ये वापस में समझा रहा हूं. You are from? Andhra Pradesh. So are you able to understand Hindi? I can understand, sir. Okay. Cannot talk but can understand. Yes, sir. Okay. ये देखिए, the problem is that you have to see the position of the debtor, financial position. Okay, sir. और वो again you are making a same mistake. Okay. Okay, sir. So don't worry. After understanding this financial position, he is in the. We have to understand that the debtor's position is good on 31st of March. So there is no indicator of any insolvency and therefore it is non-adjusting event. Got the concept? Yes, sir. Yes. Read next question. As on 31st March, there was a claim for damage from one of the customers against the company engaged in selling of accounting software for an alleged failure to provide satisfactory after-sale services in relation to the software purchased from it. Before finalization of the accounts for the year ended 31st March, the accounts were finalized on 14th July. The company won the case and had no liability whatsoever in this regard. The company has made a provision for this contingent liability in its account for the year ended 31st March, which it says will be reversed in the next year. Give your views on the above. So whether condition is existing on the balance sheet date, that person has already filed the claim against the company? Yes, sir. There was a claim. Claim Yes, था sir. ना after sale service का. Yes, sir. He is not satisfied. The buyer is not satisfied with our services. Yes, The sir. customer is not satisfied with our services and therefore he It is filed a an case. But we won Yes, it, sir. no? Yes, We sir. won the case. We won the case. So why there is need of provision? You have to reverse it. So it is adjusting event. Yes, sir. Okay. Yes. Provision of AS. एक second. ना. No liability is existed. Actually, they haven't provided anything. That they have only recorded as contingent liability. आया समझ में? So they Yes, sir. recorded as a contingent liability. If they recorded as a contingent liability in that case, why we have to reverse the entry, no? Yes, sir. अरे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था. उन्होंने प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड किया था. They only give Provision for contingent liability. contingent liability. Contingent liability is only recorded in the books as a notes Yes. to accounts. Yes. Contingent liability की कभी एंट्री नहीं होती है मुन्ना. Yes, sir. कंटिंजेंट लायबिलिटी की ओनली नोट्स में लिखा जाता है. Yes, तो sir. रिवर्स करने का कोई सवाल ही नहीं है. प्रोविजन Yes, की एंट्री होती है. कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ नोट्स में बताया जाता है भाई. समझा? Yes. यस. Yes. एक सेकंड. ओम जी रीड द आंसर. ओम भाई रीड द आंसर. क्या हुआ ओम? अनम्यूट करो. Yes, sir. Provision of AS. As per AS4, adjusting events are events occurring after balance sheet date, which provide further evidence of condition existing on the balance sheet date. Also, as per AS29, provisions should be recognized only when there is a present obligation and the amount can be ascertainable. Analysis and conclusion. The winning of the case by the company after the date of the balance sheet constitutes additional evidence in the accounts. This makes it an adjusting event. Therefore, the company should adjust its financial statement to reflect the fact that no liability existed and no provision is needed. The idea of reversing the provision in the next year is incorrect and inconsistent with accounting standards. So there is no need to reverse the provision. No, we have recorded as a contingent liability.
सो प्रोविजन है ही नहीं तो कहां से रिवर्स करेंगे? समझ में आ रहा है Yes, sir. ओम जी? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? जी sir. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। SS Limited wants to adjust the bank balance of the balance sheet on the balance sheet date by reversing the entry for a check issued in the normal course of business and cancelled after the year ended but before the finalizing of accounts. The check was returned on the ground that the signature differs. Give your views on the above. The adjusting event because condition exists. नहीं बेटा, one thing you have to understand over here. This check is in normal course of business, it is cancelled. So actually, two views, I will give marks for that. Both options are correct according to me. Some people may think that there is a signature, तो signature है मतलब conditions is existing on the balance sheet date. Okay? Yes, Condition sir. is existing on the balance sheet date. And some people may think if there is no condition, means signing is not a condition, so this is non-adjusting event. Okay, so both views are correct. The after balance sheet date, so no condition was existing on the balance sheet date. So some people may think that signing difference is a condition. Some people are saying that signing difference is not a condition. If no condition, then no adjusting event. And if condition, then it is adjusting event. What the concept? Yes, sir. Both views are correct. तो मुझे पूछा तो नॉन एडजस्टिंग पर्सनली चेक गलत होना ये थोड़ी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये अपने को थोड़ी पता होता है, अभी हो जाती है साइन कभी कभी गलत, तो ठीक है, इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी. अमाउंट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ओके, मैं तो बोलूंगा इवेंट ही नहीं है, सिग्निफिकेंट ही नहीं है. तो सो ओम जी, आंसर समझ में आया क्या आपको? जी sir. यस, रीड द आंसर. As per AS4, adjusting events are events occurring after balance sheet date, which provide further evidence of condition existing on the balance sheet date. Analysis and conclusion. View 1. Since the reversal of check issued is providing further evidence of a condition that already existed on the balance sheet date, it can be construed as an adjusting event. Thus, the reversal of the entry can be made on the balance sheet date if the amount is material. View Okay. 2. The discrepancy in the signature discrepancies in the signature leading to the check's return occurred after the balance sheet date, indicating it was not an existing condition as on 31st March. This return is a non-adjusting event as it does not change the company's obligation to settle that liability. ओके, चलो कशिश, रीड 11 नंबर बेटा. Yes, Yes, sir. beta, we are at the end of the this accounting standard. कशिश जी, कैसा था बेटा? कितने क्वेश्चन नए समझे आपको? सर Have you noted जैसे it? यस सर, नोट करा. जैसे एक ये वाला कंडीशन क्या कहते हैं, ये एक रिवीजन एग्रीमेंट कर ऑफ लेंगे बाद प्रपोजल में. वाले में. हाँ सर. 11, 12, 13 is and 14th is the last one. तो 14 के बाद वन क्विक रिवीजन. सो एक लाइन में आपको एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग बताना है मुझे बाद में.
So up to Okay. 10 we have completed. Now only 4 questions we are going to see. New 4 questions. चलिए, और उसके बाद मैं आपको सामने 10 क्वेश्चंस के बाद स्टडी मैट के क्वेश्चंस रखूंगा. You have to tell me whether it is adjusting or non-adjusting. Study mat ke 6 questions are there. Then this accounting standard, I don't think only writing practice you have to do it for this accounting standard. See, this accounting standard is very easy to say it is adjusting or non-adjusting once we have gone through this question. But at least try to read some, try to write some answers. 2-3 questions का answer कीजिए, तो बेटा it will be easy for you. See, and normally I have seen in study mat or in the past examination questions, you will get the answer in the paragraph form. तो मैंने उसको simplify करने की कोशिश की है. So my past students, beta, they made, you know, lot of efforts to write it in the proper way. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से आंसर को लिखिए. ठीक है? चलिए. So read it. Yes, sir. A Limited closes its account on 31st March every year. It issued a check in favor of one of its customers towards the refund of advance in January. In June, customer returned the check to the company without presentation to the bank while accounts of the company for that year were being finalized. Since the check was cancelled, reversal entry was passed in the books of account as on 31st March with a view to disclose the correct balance as on that date, instead of showing the bank balance lower by treating the check as issued but not in cash. Whether the reversal passed in books of the company was proper since the check was cancelled before closing of the accounts for the year. Sir, adjusting event. नहीं, आपको ट्रांजैक्शन ही नहीं समझ में आया. देखो, मैंने कशिश को एक चेक दिया. Yes, sir. ठीक है? कशिश ने मुझे, कशिश इज माय कस्टमर. उसने मेरे से कुछ सामान खरीदा और एडवांस में 1 लाख रुपया भरा था. तो 80,000 ही उसकी प्राइस थी. तो 20,000 का मैंने चेक दे दिया कशिश को, रिफंड, बिकॉज मटेरियल इज ऑफ 80,000 एंड शी पेड मी 1 लाख रुपीज. तो आई हैव टू रिटर्न 20,000. लॉजिकल है. नाउ व्हाट Yes, हैपेंड आफ्टर रिटर्निंग? I have given it in the form of check, not in the form of cash. So what Kashish has done, actually she should present it before 31st of March, but unfortunately she forgot, and in June it was got cancelled. That check got cancelled. So what is the entry I passed? I already passed the entry. Kashish account debit to bank. And in June I understood that check is reversed. So I will reverse the entry, bank account debit to Kashish one more time. So Kashish is again my liability. And bank balance, I will record it as check in hand or might be bank account. Now the problem is that reversal entry, and this happened in the June. So whether I should write और मैंने ये एंट्री 31st को ही रिवर्स करना चाहिए या जून महीने में रिवर्स करना चाहिए, क्या लगता है आपको कशिश जी? सर 31st मार्च में तो बैलेंस रिवर्स आ जाएगा ना सबको. तो मतलब एडजस्टिंग बोल रहे हो आप? हाँ. नहीं ना बेटा, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ये चेक इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है. हाँ सर. और यदि बड़ी अमाउंट होगी भी तो भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. ओनली डिस्क्लोजर दे देना बेटा. ये होते रहते हैं आज से बिजनेस में. ओके. गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर. ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन था बेटा. ये था या आगे का था? कुछ तो था एक क्वेश्चन. हाँ, रीड द आंसर. Yes, sir. As per AS4, events that indicative of conditions arising after the balance sheet date are considered non-adjusting. Not adjusting events are to be disclosed by way of notes to accounts if their nature will materially impact users' information. Analysis.
The events of cancellation of check after the balance sheet date did not relate to conditions existing at the balance sheet date. Bank balance on balance sheet date should not be adjusted by passing a reversal entry since it is not an adjusting event. However, the amount of check is material enough to affect the financial position of the company. Its disclosure should be made in the report of approving authority. Correct. Got the concept? Yes, sir. So ये अमाउंट मटेरियल होती तो ठीक है, डिस्क्लोज करो, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट. Only 3 questions are remaining. Yes, sir. थोड़ा सा. I know 1 hour is already completed. कशिश जी, आप में इतने पेशेंस रह जाते कि मैं इतने क्वेश्चंस लेता हूँ, आप पूरा टाइम सुन सकती हो? हाँ सर, पता कब नहीं थक चला, जा 1 घंटा हो गया. 1 घंटा हो गया, पता नहीं चलता. ओके ओके. पर थकते नहीं हो? इतना पढ़ाई 1 घंटा पूरा, इतना काम करना, एक एक क्वेश्चन इतना रीड करना. नहीं सर. नहीं, एग्जाम पास में आया है, जो मिलेगा वो सही है सर. चलिए हाँ सर. ठीक है. यस, रीड इट. A company follows April to March as its financial year. The company recognizes checks dated 31st March or before received from the customer after balance sheet date, but before approval of the financial statements by debiting checks in hand account and crediting debtors account. The checks in hand is shown in the balance sheet as an item of cash and cash equivalent. All checks in hand are presented to bank in the month of April and are also realized in the same month in the normal course after the deposit in the bank. State with the reasons whether the collection of checks bearing date 31st March or before but received after balance sheet date is an existing event and how this fact is to be disclosed by the company. देखो, मुझे कस्टमर से चेक मिले. आई एम रिसीविंग चेक फ्रॉम पूजा. पूजा इज माय कस्टमर. On 31st of March, I have written the entry check in and account debit to Pooja. I cancel Pooja's account. So Pooja is my debtor. Debtor is showing debit balance. उसको cancel करूंगा तो credit दूंगा. And I will show check in and is my asset. So asset has a debit balance. So check in and account debit to debtors. That entry I am going to pass. Now what happened? I will reverse the entry. जब checks जो है वो realized हुए, तब मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक बैलेंस इंक्रीज करूंगा एंड चेक इन हैंड अकाउंट को कैंसिल करूंगा आफ्टर डिपॉजिटिंग इट. ओके. अभी कलेक्शन हुआ था 31st मार्च को. सॉरी, कलेक्शन नहीं हुआ था. अभी चेक पे डेट 31st मार्च लिखे थे, पर मैंने वो रिसीव किया आफ्टर बैलेंस शीट डेट. तो फिर मैं क्या करूं? आई कलेक्टेड द चेक आफ्टर balance sheet date. Is it adjusting event? What do you think? Yes, sir, it is adjusting. It is a because regular course of business. Yes. Regular. Yes, sir. Not consistent with the S4 requirement. It is a regular activity. It is Read the not answer. significant. So here what you have to do, you have to disclose both definition, adjusting also and non-adjusting also. And then you have to read the provision, check dates do not represent any condition which is existing on the balance sheet date. So check receive होना ये कोई बड़ी बात नहीं है. It is non-adjusting event. ओके. और ये कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन भी नहीं है, सो डिस्क्लोजर भी मत दीजिए. समझ में आया? यस सर. ये मॉड्यूल का आंसर है. ये स्टडी मैट में एग्जाम्पल में लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आने की संभावना है. ओके. सो रीड द आंसर. Yes, sir. Provision of AS. As per AS 4, adjusting events are the events occurring after the balance sheet date, which provide further evidence of conditions existing on the balance sheet date. As per AS 4, events that indicative of condition arising after the balance sheet date are considered non-adjusting. Non-adjusting events are to be disclosed by way of notes to accounts if their nature will materially impact users' information.
Analysis and condition. Even if the checks bear the date 31st March or before, checks received after 31st March do not represent any condition existing on 31st March. Thus, collection of checks after balance sheet date is not an existing event. Recognition of checks in hand is therefore not consistent with the requirements of AS4. Moreover, collection of checks after balance sheet date does not represent any material change or commitments affecting financial position of the enterprise, and so no disclosure of such collections in the director's report is necessary. Very good, beta. Got the concept? Yes, sir. Read this question. Second last question. Yes, sir. SS Limited has its corporate office in Mumbai and sells its products to stockists all over India. On 31st March, the company wants to recognize receipt of checks dated 31st March or before as checks in hand by reducing trade receivables. The checks in hand is shown in the balance sheet as an item of cash and cash equivalents. All checks are represented to bank in the month of April and are also realized in the same month in the normal course after deposit in the bank. State with reason whether each of the following is an existing event and how this fact is to be disclosed by the company. Checks collected by marketing personnel of the company from stockists on or before 31st March. Checks sent by stockists or by through courier on or before 31st March. कुछ समझ में आया क्या आपको? हाँ, What sir. happens? My corporate office is in Mumbai, and I'm selling product through stockist. Stockist पता है ना आपको कि जो मतलब पूरा स्टॉक इकट्ठा वो ऑर्डर लेके आते हैं. स्टॉकिस्ट कौन होते हैं कि वो ऑर्डर लेके आते हैं एंड दे सेल इट. ओके, और वो मुझे Okay. चेक देते हैं. वो चेक कलेक्ट करते कस्टमर से और वो चेक मुझे देते हैं. ये स्टॉकिस्ट का काम होता है. यू गॉट द आइडिया? Yes, sir. Agents जैसे ही होगा ना? क्या क्या? Agents, principal agent. Agents, हाँ, principal agent relationship between me and that stockist. Yes, बेटा, you are correct. तो मैं एंट्री कब करता हूं? चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट देता हूं और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करता हूं. एंड चेक इन हैंड अकाउंट ये मैं बैलेंस शीट में बताता हूं. अब ये सभी चेक मेरे अप्रैल महीने में बैंक में जाते हैं और नॉर्मली मैं उसी महीने में डिपॉजिट करता हूं. अभी उनका क्वेश्चन क्या है कि मैं चेक इन हैंड की एंट्री जब चेक स्टॉकिस्ट के हाथ में आया तब रिकॉर्ड करूं या उसने चेक मुझे भेजा तब रिकॉर्ड करूं? इज द कॉन्सेप्ट. गॉट द आंसर? Yes, sir. देखो, रीड करो. तो Provision वन of- इज एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग. हाँ, देखो. Yes, sir. Read करें. ओके, सो जब चेक स्टॉकिस्ट के पास आ जाएगा ना बेटा, उसी टाइम पे उसको एंट्री कर लेना, ना कि आपके पास आया तब एंट्री करना. गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. हाँ, रीड द आंसर. Yes, sir. Sir, वो ऊपर का provision. नहीं, वो कुछ नहीं, वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन है. Okay, sir. Analysis and conclusion. First, checks collected by marketing personnel on or before 31st March. In this case, the checks were collected by the bank's personnel on or before the balance sheet date, meaning the company has physical possession and control of these checks by 31st March. Therefore, they provide evidence of funds received from stockists as of the balance sheet date. This is an existing event under AS4 and the receipt of checks is confirmed by possession
on or before the balance sheet date. Second, checks sent by the stockists on through courier on or before the 31st March. For checks sent via courier, physical receipt and control by SS Limited are not achieved by the 31st March. The funds are therefore not under the company's possession on the balance sheet date. Since these checks are only expected to be received in April, the amount remains as a trade receivable as of 31st March. This is a non-adjusting event under AS4 as the receipt of funds are not established as of the balance sheet date. Got the concept? Yes, sir. एंड डिविडेंड का तो आपको पता ही है. एंट्री पास करते हैं क्या ओनली नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते बेटा हम लोग? एंड नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं. बस दिस इज अ न्यू प्रोविजन, तो ये रीड कर लीजिए एंड yes, read the question and immediately read the answer. Okay, sir. For the year ended 31st March, the financial statements of SS Private Limited were adopted on 31st July. At a meeting, directors proposed a dividend for the previous completed financial year of 25% on the equity share capital amounting to 10 lakhs. No entry was passed for the proposed dividend in the books of the company, since in the view of directors the same was not required as per Schedule 3. Answer: provision of AS. Dividends proposed after the balance sheet date do not represent a present obligation at a balance sheet date, hence they are considered non-existing events under AS4, and no provision for these dividends should be made in the financial statements as of the balance sheet date. Analysis and conclusion. In this case, as the dividend was proposed after the balance sheet date but before the approval of the financial statements, it qualifies as a non-existing event. This means that no liability for the proposed dividend existed as of the 31st March. Thus, the directors of SS Private Limited acted correctly in not passing any accounting entry for the proposed dividend in the financial statement for the year ended 31st March. Correct, beta. See, this is not the practical standard. So there is no solving in this standard. Only we have to identify the transaction and whether it is adjusting or non-adjusting. The standard is, very difficult to write it. I'm not saying ki it is very simple to write, because students are normally, I have seen papers where they only mention adjusting and non-adjusting. So it's my request to all of you, take a screenshots of these answers, go through these answers, write it properly. I will provide you solution also. No solutions, because I don't want to give you everything in spoon feeding format. So I'm going to give you only solutions in the screenshot format. If you have time, you can write it. If you do not have time, आप कभी भी इसकी एक compile कर दो, all screenshots together and save it somewhere, that PDF file. ओके होता है ना, आप लोग करते हो ना वैसे, और वो PDF फाइल किधर लैपटॉप में सेव करो या आपके मोबाइल में सेव कर लो, दोनों में पॉसिबल है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है. So yes. एक बार वापस रिवीजन करते हैं. यस बेटा फटाफट बोलिए. 40% एसेट्स. सर अगर गोइंग कंसर्न होगा तो एडजस्टिंग है, अभी गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर हम उसको नॉन एडजस्टिंग लेंगे. सेकंड रॉकी सरफेस. Sir, event occurring after the date of approval of the balance sheet. No event. Financial This is no, statement. AS4 is No not event. applicable. Staff welfare provision. Sir, provision करेंगे एडजस्टिंग करेंगे. इवेंट. ठीक है. 1 लाख का टोटल. एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है. हाँ, एग्रीमेंट टू सेल हो जाए, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो एडजस्टिंग इवेंट. नेक्स्ट. सर प्रपोजल टू सेल नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट रहेगा. रुको. अच्छा.
क्वेश्चंस भी याद हो गए 15। बाप रे। हाँ जी। प्रपोजल होगा तो नॉन एडजस्टिंग, इंसॉल्वेंसी प्रपोजल ऑफ होगा तो डेटर। नॉन एडजस्टिंग। सर सॉल्वेंसी ऑफ डेटर में हम लोगों के पास कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही रिलेटिंग टू डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो नॉन एग्जिस्टिंग है। सर सेल्स लेजर का बैलेंस 65,000, सर इसमें भी 95,000, नॉन एग्जिस्टिंग रहेगा क्योंकि नॉन एडजस्टिंग, कंडीशन सेम आंसर। एग्जिस्टिंग। लिटिगेशन। सर सर इसमें रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट था ना। हाँ, मतलब रिवर्सल नहीं होगा क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी करके ही रिकॉर्ड किया था। यस सर। चेक सिग्नेचर डिफरेंस के कितने व्यूज थे? सर दो व्यूज थे, अगर हम उसे सिग्निफिकेंट लेंगे तो एग्जिस्टिंग, नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे तो एक कंडीशन होगी। रिटर्न ऑफ चेक फॉर कैंसलेशन। सर इसमें भी ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहा था, सिग्निफिकेंट नहीं था। नॉन एडजस्टिंग था। नॉन एग्जिस्टिंग। चेक रिसीव्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये तो रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है। रेगुलर ट्रांजैक्शन में आ गया। हाँ, बहुत ही ज्यादा बताना है तो आप बता सकते हो। देन स्टॉकिस्ट का आंसर पहले केस में एडजस्टिंग, सेकंड केस में नॉन एडजस्टिंग। नॉन एग्जिस्टिंग। एंड प्रपोज्ड डिविडेंड you are going to record it in the notes to accounts. नोट्स टू अकाउंट है। Okay, यस सर। so is it simple? यस सर। इजी लगा आपको ये स्टैंडर्ड? हाँ सर। स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 5 मिनट्स 4 क्वेश्चंस को, देन आई विल गिव यू 5, 6, 7 and 5 minutes. So read it and write it somewhere. Only adjusting, non-adjusting or no event occurring after balance sheet date. 5 मिनट के बाद we will discuss it. Write it somewhere. Exactly after 5 minutes we are going to disclose it. एक सेकंड, 3 मिनट देता हूं। नहीं ठीक है, 5 मिनट लो, चलो। टेक 5 minutes, 1 minute for one question. 1 minute.
Yes, beta Kashish, easy or difficult? Easy? चलो बोलिए. Yes, sir, easy है, First sir. answer. Sir, first वाला adjusting event रहेगा. See the answer. Yes, necessary adjustment. Second. सर सेकंड अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रही तो वो एग्जिस्टिंग इवेंट रहेगा क्योंकि मेजर वेयर हाउस तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ तो. थर्ड वन. हाँ सर. सर थर्ड वन में एडजस्टिंग इवेंट रहेगा, इसमें प्रोविजन लोगों को बनाना पड़ेगा. ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है ना, फिफ्थ वन. रिकवरी नहीं होने की. सॉरी, फोर्थ वन. फोर्थ वन सर कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी तो नॉन एग्जिस्टिंग. ओके. चलो नेक्स्ट फोर क्वेश्चन. वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बेटा. Pooja has written it in the chat section, adjusting or non-adjusting. Now I am giving you only 3 minutes this time. 3 minutes are sufficient, no? Chalo, 3 minutes. 5, 6, 7, 5. PYK. Yes, chat section में किसने लिखा क्या? Over.
Yes. Any one of you? ओम भैया. हाँ जी ओम, बोलिए. ओम. यस सर. हाँ, फिफ्थ का आंसर. फिफ्थ सर नॉन एडजस्टिंग होगा नो क्योंकि नो, नॉट एडजस्टिंग नहीं. दिस इज S4 इज नॉट एप्लीकेबल. ओके सर. यस फॉर नॉट. 6 ये अर्थक्वेक बैलेंस शीट से डेट से पहले आया है, दैट्स व्हाई एडजस्टिंग. लास्ट वीक. और यही अर्थक्वेक बाद में ऑकर होता तो फिर नॉन एडजस्टिंग होता. फेब्रुवरी में ही वो था ना. यस सर. यदि 31 मार्च के बाद आया होता अर्थक्वेक तो अलग बात थी. अर्थक्वेक था ना. 7 नंबर. सर 7 नंबर में वाई को प्रोविजन करना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट से पहले उसको डाउट है डेटर्स पर. करेक्ट, एडजस्टिंग. फिफ्थ में फिफ्थ में सर एडजस्टिंग होगा क्योंकि बैलेंस शीट से पहले 20 लाख का प्रॉफिट, क्योंकि वो लोग पहले ही सेल कर चुके हैं, बस डॉक्यूमेंटेशन बाकी है करना. ये लास्ट क्वेश्चन है. फाइनेंशियल्स पहले ही बन चुके हैं. तो 4 लाख का प्रोविजन. नो. कॉम्पिटिटर को 15 लाख फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्राई provided for a sum of 10 lakhs. On 18th May, the court decided in favor of party. हाँ, एंड अप्रूव्ड ऑन 30th May है. ओके, और 18th May को ही ये हुआ है. सो दिस इज द एडजस्टिंग इवेंट. So this is the adjusting event. Yes. Any closing remark? Otherwise, we'll take a break up to 12:50. एक 20 मिनट का break. In break, you can read S5. 12:50 को हम लोग मिलते हैं. Any difficulty? Yes. कशिश बेटा, any difficulty in this standard? No. Yes, sir. No difficulty, sir. Liana Rias. Liana Rias ji. Can you unmute yourself? मधुलिका. मधुलिका बेटा. They don't want to answer, I think. ठीक है, शोएब. ओके बेटा. हाँ जी बेटा, शोएब. सर मेरे को एक डाउट था, इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड सर वो हाँ, एडजस्टिंग होगा या नॉन एडजस्टिंग? वो P&L में जाएगा. इंटरिम डिविडेंड पहले ही आ जाता है, उसके लिए रुकना नहीं पड़ता है. और सर एक एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 में. हाँ, सर वो उसमें फायर जो है वो मार्च में अगर हुआ है, सर ये वाला नहीं, पीछे आई थिंक आपने इनिशियली जो लिया था. एडिशनल क्वेश्चंस.
सर इसमें फायर तो अकड़ हुआ है ना मार्च के अंदर, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है 15th को। ओके ओके ओके, नहीं फिर ये एडजस्टिंग का आंसर था, सॉरी। फायर ऑकर्ड इन मार्च मैंने देखा नहीं। ठीक है, दिस आंसर इज वेरी एडजस्टिंग, यस यू आर करेक्ट शोएब। Insolvency is declared afterwards, but fire is already condition was not good. Six का आंसर, सॉरी माय मिस्टेक। 6 में फायर ऑकर ये मार्च में हो चुका है, तो एडजस्टिंग का आंसर आएगा ये। एक काम करो, क्वेश्चन को चेंज कर दो, अप्रैल लिख दो, नहीं तो पूरा आंसर बदलते बैठना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मार्च में आया तो एडजस्टिंग। शोएब जी, यस शोएब जी, रेज योर हैंड। तो पता था ना हमें। So if Okay, sir. fire occurs in April, it is non-adjusting. And if it is occurred in March, then it is adjusting. यस सर, बस यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ ठीक है, मैंने भी पढ़ा नहीं वो फास्ट फास्ट में। शोएब कैसा था बेटा ये स्टैंडर्ड, क्या नए पॉइंट समझे बेटा आपको, क्या ऑलरेडी किया सर हुआ था आपने? नहीं, जो चेक्स वाला पॉइंट्स थे ना सर वो क्लियर हो गए, वो पहले नहीं किए थे। पहले नहीं किए चेक्स इन केस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। थे। यस, सो यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes, but I think now this standard is very clear to you. बराबर? क्यों बार बार अनम्यूट करो, रखो थोड़ा सा। यस सर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? सोनाली जी कुछ डाउट बेटा? नो सर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में रीड S5 एंड वी विल कम एट 12:50। ठीक है भार्गव जी, ब्रेक ले लीजिए।
Bhargav. Now we are going to start with the fresh accounting standards. Fresh accounting standard is 5, net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. I have changed some PowerPoint presentation from last session. तो आप लोग एक बार quick revision कर लो. So what is the presentation? You can see here, Schedule 3 of the Companies Act 2013. You know that profit and loss account pro forma. Here you can see this pro forma. We have exceptional items and extraordinary items. So you have to show it on the separate line. Okay, exceptional item and extraordinary item. What is the scope of this accounting standard 5? Let's quickly revise this. Scope of this accounting standard is to clarify the treatment of certain items in the profit and loss account. Second one, to clarify the treatment of extraordinary items and prior period items. And third one, specify accounting treatment of changes in accounting estimates and changes in accounting policies. So P&L account, we have to divide it. Extraordinary and prior period items, we have to understand. Changes in policies, if there are estimates and policies, are two different points. Net profit or loss the period. Now see, all income and expenses which are recognized in this period, okay, accrual based concept should be included in the determination of net profit or loss for the period. Okay. Now our profit and loss is divided in two parts: ordinary activities, extraordinary activities, and prior period items. Sorry, three parts. So ordinary activities also, which are regular activities, normal transactions, day-to-day transactions. Profit or loss on sale of merchandise. But suppose if their size or nature are different, we have to disclose it separately. We have to show it separately. Okay. Inventory written down to net realizable value. Then disposal of property, plant and equipment or long-term investment. Litigation, settlement, legislative changes and other reversal of provisions, exceptional items. Extraordinary activity, distinct from ordinary activities, infrequent events does not necessarily mean extraordinary. Profit or loss on sale of investment, disclosed separately in the statement of profit and loss account. Examples which are given: attachment of the property of the entity and earthquake. Prior period items, if errors are occurred due to the previous mistakes and misinterpretation of the facts or incorrect application of the accounting policies, we will call it as the prior period items. Okay. And changes in accounting estimates, you can check here. If there is an approximation which are going to change, then it is called as the accounting estimates may change. So if the period of the change, if changes occur in that period only, and if the period of the change in the future period, if changes affects both, then and if you can't ascertain, at least you should disclose the fact. Accounting policies, changes in accounting policies required by statute for compliance with accounting standard and for better presentation, and not change in accounting policy, events that are differ in substance and for transactions that haven't occurred before. So ये एक chart है accounting policies का, and here we have completed with the accounting standard. This is a quick revision of S5. Okay. So remember, whenever there is difficult to divide whether this is estimate or policy, you always assume this is change in accounting estimate. कुछ भी नहीं समझाए तो बता दीजिए. Yes, that list of accounts. Actually, extraordinary activity ऐसा कुछ exceptional items ऐसा नहीं है, but extraordinary activity attachment मतलब what?
प्रॉपर्टी गिरवी रखना. सो कविता, अटैचमेंट मीन्स प्रॉपर्टी को गिरवी रखना. एक्सेप्शनल मीन्स साइज उसका थोड़ा अलग है या समथिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देखते हैं. एक ही मिनट, मैं क्वेश्चन डाउनलोड कर रहा हूं. एक ही मिनट. चलो बेटा, सॉरी, फाइल थोड़ा सा डाउनलोड कर लेता हूं. यस, आ गया रहेगा ऐसा एज्यूम करता हूं. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये इजी स्टैंडर्ड है. सो आप लोग इजीली कर पाओगे ये, डोंट वरी. S4 ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था. S5 यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. ठीक है, कशिश रीड बेटा. Yes, sir. SS Limited has vacant land measuring 10,000 square meters, which it had no intention to use in the future. The board of directors decided to sell the land to Tide
over its liquidity problems, the company made a profit of 5 lakhs by selling the said land. There was a fire in the factory and a part of unused factory shed valued at rupees 4 lakh was destroyed. The fire loss was set off against the profit of land and a profit of rupees 1 lakh was disclosed as net profit from sale of assets. Do you agree with the treatment and disclosure? If not, state your views. What do you think? सर सेल ऑफ लैंड तो एक एक्सेप्शनल आइटम होगी और जो लॉस होगा वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा. हाँ, रीड आंसर फिर डिस्कस करते हैं. ओके सर. Provision of AS10 outlines the accounting treatment for property, plant and equipment. It specifies that gains from sale of fixed assets should be recognized separately, especially when the asset is not intended for use in business operations. AS5 mandates that extraordinary items such as losses from natural disasters should be disclosed separately to reflect the company's financial performance accurately. Analysis: selling of land to tide over liquidation problem as well as fire in the factory does not constitute ordinary activities of the company. These items are distinct from ordinary activities of the business and which are both material and expected not to recur frequently or regularly. Thus, these are extraordinary items. Extraordinary items of an enterprise during the period should be disclosed in the statement of profit and loss as a part of net income. The nature and amount of each such item should be separately disclosed in the manner that their relative significance and effect on current operating results of the period can be perceived. देखो बेटा, दोनों अलग अलग आइटम्स है. ये आपको कैसे पता बेटा आपको कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और एक एक्सेप्शनल है? दिस इज एक्सेप्शनल, सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड फायर लॉस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो यू हैव टू शो सेपरेटली बोथ ऑफ देम. बराबर है कशिश? यस सर. और यही हमें लिखना है. इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. We have to disclose it separately, and extraordinary Yes, items also we have to disclose it separately. Separately. And we cannot take set off. ये क्वेश्चन Yes, था sir. क्या स्टडी मैथ में बेटा? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मतलब सेट ऑफ वाला नहीं था. अच्छा, एक बार मैं check करूं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. SS Limited has Any other student who wants to read? Raise your hand. सिर्फ कशिश ने रीड करना है. अच्छा, ओम को है. यस बेटा ओम. Yes, sir. SS Limited had provided for doubtful debts to the extent of rupees 23 lakh 3 years back. This amount had since been collected in the current financial year. Another debt of rupees 25 lakh had been identified to be doubtful during the current financial year. The company made an additional provision of rupees 2 lakh during the year. The profit and loss account for the current year disclosed in debit side provision for doubtful debts rupees 2 lakh. Give your views on whether the above treatment is proper. क्या लगता है आपको? The prior period item. और जो 23 lakhs है, this amount has been since collected. Is another 25 lakhs had been identified to be doubtful in the current financial year. बेटा ये प्रायर पीरियड लग रहा है आपको? Is it a mistake? Recovery of bad debts and provisions for new bad debts are ordinary activities, but reversals are required to be separately disclosed. And the company's treatment netting off is not correct. बेटा एक तो मैं पहले ही बोल देता हूं
कि ये प्रायर पेड आइटम नहीं था. It is just the recovery you made it in the current year related to last year. So one important point, ओम जी, ये Yes, sir. प्रायर पीरियड नहीं है. You are getting this point? जी सर. ये प्रोविजन को सिर्फ रिवर्स किया है, तो ये प्रायर पीरियड नहीं है, ये ध्यान में रखना. ओके. ओके सर. बट रिवर्सल को सेपरेट लाइन आइटम बताना है, एक्सेप्शनल. ओके. जी सर. थर्ड वन, रीड इट. A sum of rupees 10 lakh is received from an insurance company in respect of a claim for the loss of goods in transit costing rupees 8 lakh. The amount is credited to purchase account. State the duty of the auditor in this regard. What do you think? 10 लाख रुपया मिला, Yes, sir. but you credited not income, but you credited purchases. Is it correct? No, sir. Insurance claim. No, it should be record money received from insurance company is a specific loss, and it has to be adjusted only against the loss. Is against a specific loss and adjust against the loss. It should not be included in miscellaneous income or netted off against purchases. The amount received from the insurance company should be adjusted against the loss, and the shortfall should be recorded in the profit and loss. If claim is in respect of asset, P&L account should be debited, and shortfall ये आपका properly disclose as per asset से against होगा तो as per S10 property plant and equipment. If claim is in respect of asset. If the claim was lodged with the previous year but no entry was passed, entries in the P&L account should be appropriately disclosed. ये भी ध्यान में रखना. आया समझ में? Yes, sir. Yes. So purchase को क्रेडिट नहीं कर सकते. Next one. Illustration 4. A manufacturing company has written down its inventories to net realizable value by rupees 7 lakh during the financial year. State whether the separate disclosure is required under AS5. What do you think? Is required. Net realizable value is a specifically exceptional item में आता है. Specific example भी है ये. Okay? In standard Yes. itself. Read the answer. Provision of AS. Writing down inventories is a specific example of items which require a specific disclosure under AS5. Analysis and conclusion. In this case, the manufacturing company has written down its inventories to NRV of rupees 7 lakh. Hence, this should be disclosed separately under a distinct head. आगे. SS Limited makes provisions for expenses worth rupees 7 lakh for the year ending 31st March 2021. But the actual expenses during the year ending 31st March 2022 comes to 9 lakh against provisions made during the last year. State with reason whether differences of 2 lakh is to be treated as prior period items. What do you think? सर सेम जैसे हम लोग ने इलस्ट्रेट मतलब 2 में किया. Yes, beta. This is a normal. This is changes in estimate is neither an error nor an omission. Hence, do not qualify it as prior paid item. Correct? Yes, sir. Yes, beta. 6 number. The accountant of SS Limited. एक मिनट ना. हाँ जी. The accountant of SS Limited has sought your opinion with relevant reasons whether the following transaction will be treated as change Provision in accounting. for doubtful debts at the rate of 2% till current year, and from the next year the provision has been changed to 3%. So what it exactly, beta?
change in the estimation. Till the previous year, the furniture was depreciated on straight line basis, and the useful life is now changed to 3 years. And cost formula of the inventory change. देखो ये दोनों चेंज इन एस्टिमेट है और ये चेंज इन पॉलिसी है. नहीं डिस्क्लोज तो सभी करने पड़ेंगे, बट वन इज एस्टिमेट, यू शुड नो द डिफरेंस, एंड वन शुड थर्ड वन इज पॉलिसी. ओके, सो बहुत इजी है ये अभी. हाँ जी बोलिए बेटा. Yes, sir. Answer. आंसर. Provision of AS. As per AS 5, accounting estimates are approximations that may need revision as additional information becomes known. Accounting policy are methods of applying accounting principles. First, case 1. Creating a provision for doubtful debts is an accounting estimate. Hence, this is not a change in accounting policy. Case 2. Changes in the estimate of useful life of fixed assets should be considered as changes in accounting estimates. Hence, this is not a change in accounting policy. Third, changes in accounting formula is in measuring the cost of inventories is a change in accounting policy. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Explain the treatment of the following events of SS Limited. Stock seats as on 31st March 2021 have included twice an item, the cost of which was rupees 55,000. Advise about its treatment in the financial statement of accounts for the year ending 31st March 2022. क्या होगा आंसर? स्टॉक शीट जो 2021 की थी वो 2022 में अपने को समझ में आई. प्रायर पीरियड ही होगा ना, इतना क्या सोच रहे हो? Yes, sir. हाँ, स्टॉक शीट्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिड नॉट इंक्लूडेड 2 pages. An audit stock verification during the year revalued the opening stock of the year understated by 3 lakhs due to wrong counting. Discuss the treatment in 31st March. Opening stock मतलब पिछले साल. In preparing the financial statement, you come across the major theft, 10 lakhs, was detected only during the current financial year. Read the answer. Case 1. The amount of rupees 55,000 shall be deducted from opening stock as on 1st April 2021 and also shown PPI. Prior period item. Prior period items in the profit and loss account. General entry profit and loss prior period item account debit to opening stock account. Second, case 2. The company should increase the value of opening stock and also should credit the P&L account for prior period items. Journal entry opening stock account debit to prior period items account. Case 3. The amount of rupees 3 lakhs shall be added to the opening stock and also should credit the P&L account for prior period items. Journal entry opening stock account debit to prior period items account. Case 4. Assumption 1. Closing stock of preceding year has been valued based on book figures. बुक फिगर्स पे रिकॉर्ड किया तो गलत है. एंड लास्ट ईयर में हमने करेक्टली रिकॉर्ड किया था, बट इधर प्रॉब्लम हुआ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. सो 2 एजम्पशंस है. ओके, पिछले साल हमने बुक फिगर्स बराबर लिए रहेंगे तो फिर कुछ करो ही मत. अभी समझ में आया तो ओके. And closing stock would have been valued correctly in the preceding year. Hence, there is no need to rectify the same in the current year. मतलब थेफ्ट की एंट्री आपने लास्ट ईयर में एडजस्ट कर दी है S4 का यूज करके. Then there is no need of any rectification. If you already adjusted last year accounts, loss by theft था ना हमें, बिफोर अप्रूवल ध्यान में आ गया तो. ओम समझ में आ रहा है क्या बेटा? Yes, sir.
मतलब आपने लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री एडजस्टिंग इवेंट करके कर दी तो कुछ भी मत करो, करना बाकी है तो फिर प्रायर पीरियड आइटम बताओ, ठीक है? ओके यस, नेक्स्ट वन। एक एसेस 10 लिमिटेड क्वेश्चन लूंगा मैं, एंड आई विल लीव यू, कि आपको ध्यान में आ गया है फिर तो। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, रेगुलर बैच में बहुत क्वेश्चंस लूंगा, 10 क्वेश्चन सफिशियंट है, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना आज। हाँ जी, बिकॉज जितने क्वेश्चन बनाऊंगा उतने आपके कमी है इसमें। हाँ जी। SS Limited provided rupees 25 lakhs for inventory, ऑब्सोलेसेंस, obsolescence, ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकली obsolescence बदल गया, ये आउटडेटेड हो in गई। the last year. In the subsequent year, it was determined that some 50% of such stock was unusable. The company wanted to adjust the same through prior period adjustment account as the provision was made in the earlier year. State your views. अब भी समझ में आया ना, अनयूजेबल है तो ये प्रायर पीरियड थोड़ी है, समझ में आ रहा है? जी सर। आपको तो अब भी समझ में आया कि ये यूज कर नहीं सकते, तो आपने पिछले साल भी आपने प्रोविजन करके रखी थी, तो इट इज नॉट प्रायर पीरियड आइटम, ओके? यस सर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है। आंसर पढ़ू सर? हाँ जी, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एक्सेप्शनल है। Provision of AS. Prior period items are incomes or expenses which arise in the current year due to errors or omissions in one or more prior periods. However, reversal of written down inventory is a specific example of ordinary items which requires separate disclosure. An accounting estimate may have to be revised if changes occur in the circumstances on which the estimates was based or as a result of new information, more expense or experience or subsequent developments. The revision of the estimate by its nature does not bring the adjustment within the definition of an extraordinary item or a prior period item. Analysis and conclusion. In the given case, revision of the estimate of obsolescence does not make the resulting amount of rupees 12.5 lakhs as a prior period item or an extraordinary item. Since the amount involved is material, it requires separate disclosure to understand the financial position and performance of the enterprise. बेटा मैंने गलती से एक्सेप्शनल बोला, इट इज नॉट एक्सेप्शनल बट चेंज इन द एस्टिमेट है, आया समझ में? एंड इट अफेक्ट्स द अमाउंट and therefore you have to record it separately. So this is the pure example of not prior period, it is a pure example of estimate. आया समझ में? Yes, sir. हाँ जी, चलो एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Closing stock for the year ending on 31st March 2022 is rupees 1.5 lakh, which includes stock damaged in fire in 2020 and 2021 on 31st March 2021. The estimated net realizable value of the damaged stock was rupees 12,000. The revised estimate of net realizable value include in closing stock of 2021-2022 is rupees 4,000. Find the value of closing stock to be shown in profit and loss account for the year ending 2021. सी बेटा दिस लास्ट, ये स्टॉक जो है ये डैमेज स्टॉक इंक्लूड कर रहा है 12,000, पर आज के दिन पे उसकी वैल्यू 4,000 हो चुकी है, तो डैमेज स्टॉक इज यू आर शोइंग इट एट कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लोअर, तो 150 में से यू विल रिकॉर्ड इट एट 4,000, करेक्ट? एंड बचा कितना? 146, so you will continue with 146. Got the concept? And you will record separately damage stock separately and other stock separately. Got the concept? Yes, sir. ठीक है, read the answer. Prior period items are income or expenses which arises in the current year due to error or omission in one or more prior periods. As per AS5, accounting estimates are approximations that may need revisions as additional information becomes known. Analysis and conclusion. It is assumed that the closing stock on 31st March 2022 of rupees 1.5 lakh include damaged items valued at new NRV rupees 4,000, and such damaged items have already been written down to their revised NRV, that is rupees 4,000.
ठीक है, लास्ट वन. Finished goods costing worth rupees 10 lakh were damaged due to flood in July 2020. These goods were included in the closing stock as on 31st March 2021. At an estimated realizable value of rupees 4 lakh, these goods ultimately could be sold for rupees 3 lakh only in the accounting year Same 2021. example है, same example, but you have recorded 1 lakh as a prior paid. Is it correct? Is it a prior paid, or it is a change in estimate? Okay, so this is change in estimate. So we are not going to record it as a prior paid item. Got the concept, beta? Yes, sir. So I hope you will solve extra questions from study mat. This is not at all difficult. You can apply your common sense to understand it is ordinary, exceptional, extraordinary, or prior paid, or change in estimate, or change in policy. Okay, solve study mat questions. Any difficulty, beta Om? सर AS4 में थी क्या? वो इलू 6 और एडिशनल क्वेश्चन 6 में एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप बता सकते हैं सही है कि नहीं? पूछूं? अच्छा, सर वही जो इन्होंने गलती निकाला हाँ था शोएब ने. हाँ सर, हाँ उसी जी, में तो एक बार और पूछूं सर? हाँ बोलिए ना. सर इलू 6 में जो अर्थक्वेक वाला था उसमें सर कंपनी ने 31 मार्च से पहले 5% फरवरी में 5% की बैड डेट्स की प्रोविजन की थी, जिसमें कि कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा था कि उनके डेटर बैड हो सकते हैं, और जो कि हो भी गए अप्रैल में जाकर के. बट एडिशनल क्वेश्चन 6 में जो फायर इनकर हुई थी उस टाइम कंपनी ने कोई ऐसी मतलब प्रोविजन नहीं की थी, और उन्होंने माना था कि उनके सारे डेटर गुड्स है, बट बाद में जाकर इंसॉल्वेंट हुए, मतलब इससे पहले कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. तो सर इस केस में पहला वाला एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग ऐसा कुछ? ये व्यू ले सकते हो, बट द करेक्ट वे मुझे जो लगता है कि मार्च महीने में आपको समझ में आ चुका था कि उसकी कंडीशन बैड है, तो आपने प्रोवाइड कर देना चाहिए. आपको तो फोन आ गया था ना कि भाई उसके यहाँ पे आग लग गई है, उड़ते उड़ते गॉसिपिंग तो आ चुका था. ओके सर. तो फिर आपको तो सब पता है. सो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. सो मेरे हिसाब से एडजस्टिंग ही लेना. बट सर जैसे अगर कंपनीज को पता नहीं चली कि उस कंपनी में फायर लगी जहाँ जहाँ पर उनके डेटर हैं, तो क्या उस केस में ये नॉन एडजस्टिंग अभी ये होगा? टर्म्स देखो, जब आपके डेटर्स इतने बड़े रहते हैं तो कंपनी को खबर तो लग जाती है ना, मेजर फायर ऑकर हुआ है तो. ओके सर. आपको किसी से पैसा लेना है तो बड़ा ऑब्वियस खबर तो मिल ही जाएगा. ओके. आया समझ में? यस सर, क्लियर होगी अच्छे से. ठीक थैंक यू सर. है, ओके, थैंक यू भार्गव जी. ठीक है, विल वाइंड अप द सेशन इफ दे डू नॉट हैव एनी डाउट. सो डाउट्स है क्या कुछ? 4 और 5 प्लीज नेक्स्ट टाइम. 22 पे मैं बहुत प्रैक्टिस करवा के लूंगा. सो 11 से ज्यादा 22 पे ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. भार्गव जी क्लोज्ड. यस यस.